warm welcome to your own YouTube channel. We call it as Exam Norm. My name is Madhav. I welcome you all in the next session, that is of Finance Norm. And today, in this particular session, we will be discussing the current affairs for 7th to 9th of August. So today's session is very important, and I will even call this session as a SEBI special session because today I have almost 4 circulars from SEBI alone and one update from RBI. So this session is a power pack session for your upcoming examination. So whether you're preparing for RBI, SEBI or any other regulatory bodies exam, this session is important. Along with that, this session is important even for your bank exams as well. So before I start, may I have a reply? Everything is fine. I'm audible, visible, all good. Just let me know in the comment section so that we can begin the discussion, guys, without any further delay. Just give me a yes, sir, in the comment section so that we can begin the discussion without any further delay. Done? Everything fine? Are we good to go? Let me check. All good, all good. Fine. Chalo, let's get started with the discussion. But before I start, I would request everybody quickly copy the link of this session, share it with your friends so that more and more students, they can join us live. This session will give you a great understanding for SEBI circulars as well as for the RBI circulars. Today we have, as I already said, today we have 3 circulars from SEBI and we have 3-4 circulars from SEBI and 1 circular is from RBI. This is what we are going to cover today. ठीक है, चलो लेट्स गेट स्टार्टेड. ठीक है जी, हाँ बिल्कुल, आज मैं वो क्वेश्चंस लेके आया हूँ. द होमवर्क क्वेश्चंस हैव बीन इंक्लूडेड. So all the questions from the previous session which I have given you as a homework will be discussed today in this particular session itself, so don't worry. ठीक है जी, I guess nothing to worry more. It's time to start with the discussion. चलो जी, let's get started with the discussion. So first of all, let's find the answer to the question. The question was, with reference to the IRDAI, Policyholders Education and Protection Fund Regulation 2026, consider the following statements. The regulation operationalize Policyholders Education and Protection Fund. This is correct. That is, operationalization is done. This is correct. PEPF was established under the Section 16 of IRDA Act 1999 through the Sabka Bima Sabki Suraksha Act or Raksha Act 2025. That is correct. One of the objective is to facilitate tracing and settlement of unclaimed insurance amount. Is this correct? Is this correct? Whether this particular platform will help the public or will help the investors to settle down their unclaimed insurance amount. This is also correct. So all these 3 functions will be provided by a single fund account, or it will be utilized for the single fund account settlement. So the answer to this particular question is D option. Absolutely correct. Just be correct answer diya. Badhiya. Before I move ahead, I have few things which I would like to add. The first thing which I would like to add over here is the amendments with respect to insurance intermediaries. The amendment with respect to insurance intermediaries. If I talk about the insurance intermediaries, some important points which you need to remember. If you remember, I have told you that insurance intermediaries will pay annual fees, but here the annual fees is going to be 10,000 rupees or 0.4% of 10,000 rupees or 0.4% of the commission income. तो जो भी आपकी इंटरमीडियरी की कमीशन इनकम है उसका 0.4% या फिर 10,000 rupees, whichever is higher out of the two, whichever is higher. That is important. Second point we have is it will be implemented from 1st of January 2027. That is something which is important. You have to implement it from 2027. Insurance intermediaries will go with the training, at least training of
I would say, to strengthen the professionalism, principal officers and insurance salespersons of insurance marketing firms must undergo at least 25 years, at least 25 hours of training, at least 25 hours of training every 3 years. 25 hours of training every 3 years. This is something which you need to remember. Next point which we need to remember from this is IRDA has simultaneously relaxed investment norms by permitting insurance or by permitting the insurers to invest. That means insurance companies can invest up to 20% in operational infrastructure special purpose vehicles. So all the infrastructure, operational infrastructure, that means the which are operationalized, which are running. So in the operational infrastructure special purpose vehicle, up to 20%, can be invested by the insurance companies. This is something which you need to remember. Second point which you need to remember in this particular discussion is it has also allowed the combined investment in the private companies, alternative investment funds, venture capital funds up to 3% of investment assets for life insurers and 5% for general insurers. तो ये याद रखिएगा क्या है कि अगर हम बात कर रहे हैं इंश्योरेंस कंपनी की, दे कैन इन्वेस्ट अप टू 5% and up to 3% in case of life insurance companies, in the private companies, in the alternative investment funds, as well as venture capital funds. So this is again you need to remember. The next is to limit the concentration risk, the overall exposure to promoter group entities has been kept at promoter group entities. That means the promoters, they can invest up to 5% of investment asset, while repo and government security lending transactions have been limited up to 5% of available securities or 10,000 crore, whichever is lower. So in case of insurance companies, the overall exposure to the promoter group entities can be up to 5%, and while repo and government securities can be up to 10,000 crore, whichever 25% or 10,000 crore, whichever is lower. So these are some of the important facts which you need to remember. Last class mein these facts were not discussed, but now these facts are available to you. Do revise them so that if any question is asked, we can answer it for sure. Next question from the previous class. Total business of the public sector banks has increased to $283 trillion. Trillion rupees. This is correct. Out of 283 trillion rupees, that is 283 lakh crore rupees. What is the total deposit? So deposit has reached to 156.3 lakh crores. Loan and advances, they have stood at 127 lakh crores. This is correct. So keeping this in mind, these three statements are correct. So the answer to this particular question is going to be D option. The answer to this particular question is going to be D option. Is this point clear? So all the points are correct. ठीक है जी, समझ आ गया पॉइंट, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है. चलो अगला क्वेश्चन क्या है? द नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू लिक्विडिटी कवरेज रेशियो requires banks to maintain sufficient high quality liquid assets to meet expected net cash outflows during 30-day stress period. Under the amendment, certain banks can price bulk deposit based on LCR runoff rates. So what is it? Please pay attention. अगर हमसे कोई पूछे what is the meaning of liquidity coverage ratio? So liquidity coverage ratio is basically a ratio of high quality available high quality assets with the bank. High quality assets of the bank means I'm talking about cash as well as cash equivalent, which include government securities and whatnot. ठीक है, अब RBI क्या कहता है? As per Basel norms, RBI asks every bank that you should maintain a ratio, the ratio of available high quality asset divided by net cash outflow during stress period in 30 days. मतलब क्या?
तो इसका मतलब ये है कि बैंक कैलकुलेट करेगा कि अगर कोई स्ट्रेस पीरियड है, फॉर एग्जांपल कोविड-19 है, अगर स्ट्रेस पीरियड है, कोविड-19 है, तो कोविड-19 के समय बैंक प्री कैलकुलेट करके बैठा था कि सर कितने लोग अगले 30 दिन में अपना पैसा विड्रॉ करेंगे और उसके साथ साथ कितना पैसा डिपॉजिट होगा, और उन दोनों के बीच का जो गैप है दैट इज नोन एज नेट कैश आउटफ्लो। तो अगर मान लो बैंक एक्सपेक्ट कर रहा है कि भैया स्ट्रेस पीरियड के दिनों में मेरा जो नेट कैश आउटफ्लो होगा, क्योंकि आउटफ्लो ज्यादा होगा, इनफ्लो तो होगा ही नहीं, तो मेरा जो नेट कैश आउटफ्लो होगा दैट शुड बी 100 करोड़। तो बैंक के पास जो अवेलेबल हाई क्वालिटी एसेट है दैट शुड ऑल्सो बी 100 करोड़। मतलब इन दोनों का जो रेशियो है दैट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 100%, दैट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 100%। ठीक है। अगला पॉइंट यहां पे क्या कहता है, अगला पॉइंट ये कहता है कि सर बैंक इज कैलकुलेटिंग when bank is calculating the net cash outflow, when bank is calculating the net cash outflow, in that particular case, bank should keep in mind, in that particular case bank should keep in mind that while calculating this net cash outflow, and when bank is calculating the cash outflow, when bank is calculating the withdrawals from a bank account, it should take into the consideration that is runoff rate. याद है लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था रन ऑफ रेट। सो रन ऑफ रेट इज बेसिकली द परसेंटेज ऑफ deposit which will be withdrawn during the stress period, or which will be withdrawn during the stress period from a particular account. तो जब आप कैलकुलेट कर रहे हैं what amount will be outflowing from the bank during stress period, you should also consider the runoff rate. So a higher runoff rate indicates that deposit is expected to be less stable. अगर आपका runoff rate high है, let's say it is 40% or 100%, so obviously 100% is less stable, क्योंकि 100% कहने का मतलब है there will be or there is a 100% possibility that the entire deposit will be withdrawn during the stress period. Second is commercial banks, they can offer differential interest on bulk deposit based on LCR runoff rates. This is correct कि भैया जो banks हैं they can provide different rate of interest on different bulk deposits keeping in mind the runoff rate. This is correct. Urban cooperative banks are also permitted. No sir, this permission is given only and only to commercial banks as well as small finance bank. This permission is not given to RRBs, local area banks as well as urban cooperative banks. ठीक है जी, क्लियर हो गई बात, समझ आ गई। जिसने पिछली क्लास अटेंड की होगी उसको समझ आया होगा, जिसने अटेंड नहीं की उसके लिए थोड़ा जग सुना सुना रहा होगा, तो कोई बात नहीं। जिसके लिए जग सुना सुना है वो आज इस क्लास के बाद पिछली क्लास रिवाइज कर लेना। जिसको समझ आ गया वो एक बार थम्स अप टाइप कर दो, सो दैट आई कैन मूव एंड आई कैन स्टार्ट विद टुडेज सेशन। Just give me yes sir so that I can start with today's session quickly. Done guys? No doubt? ठीक है. Let's start with the first news. The first news talks about RBI circular. So SEBI circular on closing account session for stock closing price discovery. From stock closing price discovery. तो सबसे पहले before I answer this particular question or I explain you with this particular news, I need to discuss some of the basic points which are mentioned on the screen. So the first point which is mentioned on the screen is closing auction session. Any idea guys? Anyone who has heard about this particular term? If you have ever heard about this particular term, do let me know in the comment section please. Any idea? Any idea? चलो मैं बताता हूँ. Basically closing account session, closing auction session is basically, it's a mechanism which is used by stock exchanges to determine the official closing price of a security. Official closing price of a security.
based on or through a auction based process rather than simply taking the price of the last trade executing during the normal trade session। मतलब क्या, इसका मतलब ये है कि सर मान लो सबसे पहले अगर हमसे कोई पूछे प्राइस क्लोजिंग प्राइस ऑफ सिक्योरिटी। अब क्लोजिंग प्राइस ऑफ सिक्योरिटी का मतलब समझ क्या आता है, समझ तो यही आता है कि सर किस प्राइस पे ये सिक्योरिटी कल बंद हुई थी, किस प्राइस पे ये सिक्योरिटी कल बंद हुई थी। मतलब लास्ट जो ट्रांजैक्शन हुआ yesterday, what was the transaction, let's say I'm talking about Infosys, कि सर आखिरी इन्फोसिस का शेयर कितने पे बेचा गया। किसी ने कहा सर 1200 रुपए का, तो भैया क्लोजिंग प्राइस कितना हो गया 1200 रुपीज। और कल ओपनिंग प्राइस जो होगा दैट विल डिपेंड ऑन क्लोजिंग प्राइस एज वेल, दैट विल अनडाउटली डिपेंड ऑन क्लोजिंग प्राइस एज वेल। लेकिन इस क्लोजिंग प्राइस को कैलकुलेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है और अच्छे से कैलकुलेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। रीजन, मान लो आई एम इन्फोसिस कंपनी and I know that in the entire day of trading sessions, Infosys share was not performing well. Infosys shares was not performing well. स्क्रीन क्वालिटी सही नहीं है क्या? स्क्रीन क्वालिटी सही नहीं है क्या? इज देयर एनी इशू गाइस? क्योंकि मेरे लैपटॉप पे भी ठीक नहीं है, मुझे लगा शायद मेरे ही लैपटॉप पे प्रॉब्लम है। एक सेकंड समय देना है ना। गाइस इज इट फाइन नाउ? इज इट फाइन नाउ या अभी भी प्रॉब्लम है? या अभी भी प्रॉब्लम है? मेरे एंड पे तो इंप्रूव हुई है क्वालिटी, अब अपने एंड पे बता दो। आप अपने एंड पे बता दो। ठीक है, मतलब ज्यादा इंप्रूव हुई नहीं शायद, है ना? देख लेते हैं यार, एक सेकंड दो। चलो इस क्लास के बाद देखते हैं यार क्या प्रॉब्लम है ना, क्योंकि अभी तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा कि आज प्रॉब्लम क्या है। इज इट फाइन नाउ? नहीं ना, अभी वैसा ही है ना। चलो देखते हैं, इस क्लास के बाद देखें क्या इशू है, ठीक है।
चलो प्लीज पे अटेंशन ऑन द स्क्रीन। अच्छा, हम सेबी की बात कर रहे थे ना। हाँ, तो सेबी ने एक सर्कुलर दिया। उस सर्कुलर पे जाने से पहले क्लोजिंग प्राइस क्या है सर? क्लोजिंग प्राइस का मतलब, अगर मैं टेक्निकली सिंपली बात करूं तो इट्स बेसिकली द प्राइस एट विच द लास्ट इन्फोसिस शेयर वाज ट्रेडेड, बट दैट इज नॉट करेक्ट। इट्स नॉट डन इन दिस मैनर। एक्चुअली किया क्या जाता, एक्चुअली ये किया जाता था, अभी तक क्या किया जाता था कि सर पूरे दिन में ट्रेडिंग हो रही है इन्फोसिस के शेयर की, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आखिरी आधे घंटे में, द लास्ट 30 minutes ऑफ योर ट्रेडिंग साइकिल, और आई वुड से द ट्रेडिंग चैनल, जो आखिरी आधा घंटा है उसमें जो ट्रेडिंग हुई, उस ट्रेडिंग को ऑब्जर्व किया जाता। दैट इज ट्रेडिंग फ्रॉम 3 to 3:30, दैट इज लास्ट 30 minutes। सो इन द लास्ट 30 minutes the trading was observed, and this trading observation was done in such a manner to identify the price of Infosys shares during the large volume transactions, मतलब कि आखिरी 30 मिनट जो आज के ट्रेडिंग डे का टाइम है, या मैं ये कहूं कि आज के जो ट्रेडिंग डे के बचे हैं आखिरी 30 मिनट, दैट इज एज वी ऑल नो कि 3 to 3:30 PM इज द लास्ट टाइम where you can trade on different stock exchanges in the country. So in that particular case 3 to 3:30 में जो large volume transactions conduct हुई हैं, where the purchase and sale of Infosys shares is done, those last few transactions or last 30-minute transactions are taken into consideration in order to identify the closing price. तो इसको मैं अगर थोड़ा सा और specifically and detail में जाके बोलूं, so what will be my answer to this? My answer to this particular question would be that, sir, volume weighted average price. It is called as volume weighted average price, which means the price of the security which is weighted by volume traded at each price over a specific period. For example, तीन प्राइस इन्फोसिस के शेयर के, एक था 1150, एक प्राइस है 1200 और दूसरा प्राइस है 1250। यहां 1000 शेयर ट्रेड हुए, यहां 500 शेयर्स ट्रेड हुए और यहां 300 शेयर्स ट्रेड हुए। अब वेटेज क्या होगी सर? 1150 प्राइस की वेटेज है क्या सर? इट इज 1000 डिवाइडेड बाय 1800 प्लस 1200 रुपीज की वेटेज है 500 डिवाइडेड बाय 1800, एंड 1250 प्राइस की वेटेज है कितनी? 300 डिवाइडेड बाय 1800। ठीक है, अब जब आप इसे सॉल्व करेंगे, आफ्टर सॉल्विंग दिस equation you will get the price, and that price will be termed as what sir? It will be termed as closing price. We call this as volume weighted average price. वेटेज निकालो किस पे? वॉल्यूम पे, और वॉल्यूम वेटेज ये निकाल दी और उसका क्या ले लो? एवरेज। तो वो दैट इज नोन एज बेसिकली वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। अब ये जो वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस है, ये सबको पता चल गया। अब अगर ये सबको पता चल गया तो इन्फोसिस ने कुछ एजेंट्स को हायर किया, कुछ कंपनीज के साथ टाई अप किया और उन फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स को कहा दैट इन 3 to 3:30 PM today, I want you guys to make a trade of Infosys shares and make the trade as high as you can, or make the trade price as high as you can. तो यहाँ पे एक ट्रांजेक्शन हुई जहां पे 1000 शेयर्स ट्रेड किए गए फॉर 1190. Then there will be a transaction, let's say 2000 shares की ट्रांजेक्शन हुई at price 1200, and let's say 500 शेयर्स की ट्रांजैक्शन हुई एट प्राइस लेट्स से 1210। तो इसकी वजह से जो पूरे दिन का एवरेज प्राइस, नॉर्मल एवरेज प्राइस लगभग 1100-1150 के आसपास था, वो प्राइस बढ़कर अब कितना हो जाएगा? सो दैट विल रीच टू 1200 रुपीज अप्रोक्सीमेटली, क्योंकि वेटेड एवरेज प्राइस इज कैलकुलेटेड फॉर द लास्ट 30 मिनट्स, एंड द कंपनीज, द ऑर्गेनाइजेशंस, दे ट्राई टू मैन्युपुलेट देयर क्लोजिंग प्राइस। व्हाई दे मैन्युपुलेट देयर क्लोजिंग प्राइस? बिकॉज सर अगर क्लोजिंग प्राइस ज्यादा हुआ तो कल ओपनिंग प्राइस भी ज्यादा होगा, दैट विल बी अ प्रॉफिटेबल सिनेरियो फॉर द कंपनी,
अब आरबीआई ने कहा यार ऐसा नहीं चलेगा, आरबीआई ने कहा ऐसा नहीं चलेगा, आई एम नॉट लाइकिंग इट, सॉरी सेबी ने कहा ऐसा नहीं चलेगा, आई एम नॉट लाइकिंग इट, सो आई एम कमिंग अप विद अ न्यू, SEBI has come up with a new process, has come up with a new suggestion, with a new initiative. What is this initiative all about? Please pay attention. So this initiative is basically called as identifying the closing price. Now the closing price will be calculated not for the last 30 minutes, rather it will be calculated for the closing auction session. It will be calculated from the closing auction session. अगर मुझसे कोई पूछे that how do you define the word closing auction session, what will be my answer? So in India, if I talk about the sessions which are happening, in the country, one, we have the continuous auction, this continuous trading. So one we have is continuous trading. This continuous trading is carried from 19:15 a.m. to 3:15 p.m. and then closing auction session will last from 3:15 p.m. to 3:35 p.m. and in case of, I would say, derivative trading can continue up to 3:40 p.m. so that the settlement can be done. तो जो प्राइस यहाँ पे सेट हुआ उसके बेसिस पे अगले 5 मिनट में सेटलमेंट की जा सके, so the 5 minutes extra is given. Now during the CAS, that is closing auction session, new price discovery mechanism has been introduced. What is this new price discovery mechanism? Now buy and sell orders are collected together rather than matched continuously. So the exchange determines a single equilibrium price at which maximum executable quantity of shares can be traded, and this equilibrium price basically becomes the official closing price. तो इसमें क्या होगा कि सर ये different prices पे closing auction sessions हैं, different price है. अब इनमें से वो प्राइस आइडेंटिफाई किया जाएगा जिस प्राइस पे मैक्सिमम ट्रांजैक्शंस कैन हैपन, जिस प्राइस पे मैक्सिमम ट्रांजैक्शन can happen, or I would say the price at which maximum executable quantity of shares, maximum executable quantity of shares can be traded. Quantity of shares can be traded. ये बात समझ आई? ये एग्जाम्पल लो, ये बात समझ आई, और should I take an example? Is this point clear, guys, or should I take an example? Tell me. पता नहीं, मेरा मन है कि मैं एग्जाम्पल ले लूं, तो ले लेते हैं, कोई बात नहीं, गुस्से वाली कोई बात नहीं, समझ लेते हैं चीजों को, मजा आएगा. हाँ जी, तो क्लोजिंग अकाउंट सेशन का मतलब क्या? सपोज देर इज अ स्टॉक trading at 500 rupees during the day, and near the end of the trading there may be only few traders. 2 shares they are traded at, let's say, 497, 5 shares at 498, and 1 share is traded at 501. So if the exchange simply takes the last trading price, that will be 501, which is wrong क्योंकि trading volume वहाँ पे बहुत कम है. तो यहाँ पे जो initiative है which will be taken up or which will be done, so it will be done during the closing auction session. तो ये कैसे काम करता है? So in the closing auction session, first there will be closing of orders. That means during the closing auction sessions, investors they enter buy orders or you will enter the sell orders. So unlike continuous trading, the orders are generally not immediately matched one by one. जैसे continuous trading में क्या आपने कहा मैं सेल करना चाहता हूं, किसी ने कहा बाय करना चाहते हैं, तो साइमल्टेनियसली क्या हो रही है? मैचिंग हो रही है एंड ट्रांजैक्शंस कंप्लीट हो रही है. But during the closing auction session, the exchange examines different possible prices, determine the prices at which maximum possible quantity can be traded. Maximum possible quantity can be traded. We call it as equilibrium price, we call it as auction price. तो उसमें हुआ क्या सर? उसमें ये हुआ कि जैसे अगर मैं पुरानी बात करूं या कॉन्टिन्यूअस ट्रेडिंग की बात करूं, कॉन्टिन्यूअस ट्रेडिंग में क्या होता है कि आपने ऑर्डर लगाया,
वो ऑर्डर मैच हो गया, आपने अगला ऑर्डर लगाया, अगला ऑर्डर मैच हो गया। अब यहाँ पे क्या है सर, आप ऑर्डर लगाते जा रहे हैं और वो ऑर्डर एक्यूमुलेट हो रहे हैं। आफ्टर एक्यूमुलेटिंग दीज ऑर्डर्स, इसमें कुछ ऑर्डर बाय के होंगे, कुछ ऑर्डर सेल के होंगे। तो अब क्या होगा सर, आउट ऑफ द बाय ऑर्डर्स एंड आउट ऑफ द सेल ऑर्डर्स we will identify the equilibrium price or the auction price at which maximum orders can be executed. मैं ये नहीं कह रहा सारे, but maximum orders can be executed. Maximum orders can be executed. That is basically known as equilibrium price. And from now onwards, this equilibrium price will be used. This equilibrium price will be used as closing price. एक एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो सर ड्यूरिंग द क्लोजिंग ऑक्शन सेशन वी हैव बाय ऑर्डर्स कि भैया मुझे शेयर बाय करना। तो एक ने कहा मैं 102 रुपए में शेयर बाय करूंगा, एक ने कहा मैं 101 रुपए में बाय करूंगा, एक ने कहा मैं 100 रुपए में शेयर्स बाय करूंगा। और इन्होंने जो क्वांटिटी कहीं बाय करने की 1000, 2000 एंड 3000। ठीक है जी, ठीक है। दूसरी तरफ वी हैड दी सेल ऑर्डर, जिनके पास शेयर्स हैं वो बेचना चाहते हैं। एक ने कहा मैं 98 पे बेच दूंगा, एक ने कहा मैं 99 पे बेचूंगा, एक ने कहा मैं 100 पे बेचूंगा, एक ने कहा मैं 101 पे बेचूंगा। ठीक है। अब 98 पे 1500 शेयर्स, 99 पे 2000 शेयर्स, 100 पे 2500 शेयर्स एंड लेट्स से 101 पे 3000 शेयर्स। अब अगर आप इनको ध्यान से ऑब्जर्व करें, इफ यू ऑब्जर्व करेक्टली, व्हाट इज द बाइंग कैपेसिटी 6000 शेयर्स, व्हाट इज द सेलिंग कैपेसिटी, व्हाट इज द सेलिंग कैपेसिटी। अगर मैं कहूं सेलर इज विलिंग टू बाय, सेलर इज विलिंग टू बाय at 100 or above 100, at 100 or above 100। तो अगर सेलर जो है if seller is willing to sell at 100 or above 100 is what, at 100 or above 100, at 100 or above 100 कितना है सर, ये डिफरेंट है। और अगर मैं कहूं at 100 and lower than 100, तो ये टोटल कितना है सर, दिस टोटल comes out to be 6000। दूसरी तरफ अगर मैं बायर की बात करूं, तो बायर इज रेडी टू बाय एट 100 और हायर देन 100। तो यहां पे भी कितना परचेज की बात हो रही है सर, 6000 परचेज की बात हो रही है। सो द ऑक्शन मैकेनिज्म वुड देयरफॉर आइडेंटिफाई 100 एज अ स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट फॉर इक्विलिब्रियम प्राइस, क्योंकि या तो 100 से ऊपर खरीदने की बात हो रही है या 100 से नीचे बेचने की बात हो रही है। तो इसमें अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा जो क्लोजेस्ट फिगर है, वो सबसे ज्यादा क्लोजेस्ट फिगर कौन सी है सर, दैट इज 100। या फिर ये समझो 101 पे शेयर बाय कितने हो सकते हैं, 2000, लेकिन बेचने के लिए कितने रेडी हैं, 3000। 100 पे कितने परचेज हो सकते हैं, 3000, और कितने बिक सकते हैं, 2500। तो जो मैक्सिमम permissible transaction है, that will be of 2500 shares that can happen at 100 rupees. If that can happen at 100 rupees, so this 100 rupees is going to be what? So it is going to be the closing balance. This is going to be the equilibrium price. This is going to be termed as closing price of the equity. This will be termed as closing price of the equity. ठीक है जी? So in this case, you need to remember LTP, that is last traded price. So the price at which most recent trade took place. Closing auction price is determined through an auction-based price discovery mechanism taking into account accumulated buy or sell orders. बोलो क्लियर है ये बात? Is this point clear guys? तो पहले जो volume weighted average price था, which was used as a closing price for an equity, it has been replaced. Now it will be decided with the help of closing auction session, and closing auction session में price discovery will be done. And that price at which maximum permissible transactions can be executed, that will become the auction price, that will become the executable, or that will become the equilibrium price. इतनी ही स्टोरी है, इसके अलावा तो सिर्फ बात कर लेते हैं। क्या क्या बातें हैं सुनना जरा। सेबी गाइडलाइन इशू की है, कब से, 31 जुलाई से। कब से इंप्लीमेंटेड है ये गाइडलाइन सर, 3 अगस्त 2026 से ये गाइडलाइंस इंप्लीमेंटेड है। अंटिल नाउ
3 से 3:30 बजे के बीच में जो सबसे ज्यादा ट्रांजेक्शन्स हुई हैं, वॉल्यूम वेट इनटू द प्राइस, उसके बेसिस पे कैलकुलेट किया जाता था, जिसकी वजह से एंड ऑफ द डे प्राइस मैनिपुलेशन करना आसान था। अब आपने प्राइस मैनिपुलेट कर दिया, लेकिन उसी प्राइस के बेसिस पे हम फाइनलाइज करेंगे क्या? वी विल सेटल डाउन द डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स, इंडेक्स कैलकुलेशंस होंगी, म्यूचुअल फंड नेट एसेट वैल्यू कैलकुलेट होगी, वैल्यूएशन ऑफ पोर्टफोलियो होगा, विच इज नॉट एप्रोप्रिएट, इट शुड बी डन एट एन एप्रोप्रिएट प्राइस. सो नाउ सेबी कम्स अप विद क्लोजिंग ऑक्शन सेशन. So closing auction session implemented from 3rd of August 2026. Scope is initially applicable only to equity shares available in derivative segments. So जितने भी equity shares हैं which are available in derivative segments, it will be implemented on them, and SEBI may expand it to the other securities in near future based on experience. So initially it is going to be valid only and only on equity shares which are available in derivative segment. Continuous trading, closing auction session and derivative trading. Closing auction session क्या है मैंने आपको बता दिया, and now on the basis of closing auction session price will be decided. Reduction in market manipulation impact on trading will be there. System will be ready, and we are just following the international practice which is already followed by New York Stock Exchange, which is also followed by London Stock Exchange, which is also followed by European stock exchanges. So it is a good move if it is taken up by SEBI. ठीक है जी. अब हमारे लिए फायदा क्या? सर, वी हैव मोर ट्रांसपेरेंट एंड रिलायबल क्लोजिंग प्राइस, रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ प्राइस मैनिपुलेशन एट मार्केट क्लोज, इंप्रूव इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस इन बेंचमार्क प्राइस. प्रॉब्लम क्या होती थी कि सर रात को आपने प्राइस मैनिपुलेट कर दिया, सुबह ज्यादा प्राइस पे शेयर ओपन हो गया और उसके बाद शाम तक प्राइस गिरना शुरू हो गया बहुत तेजी से. तो जिसने रात को प्राइस ज्यादा करके शेयर खरीदा था उसको पता है कल ओपनिंग प्राइस ज्यादा होगा, मैं तो बेच के निकल जाऊंगा. लेकिन जो ओपनिंग प्राइस ज्यादा पे सुबह सुबह शेयर खरीदेगा वो बेचारा वो बेचारा आदमी, वो बेचारा इंसान, इन्वेस्टर फंस जाएगा. और इसी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए ये सॉल्यूशन लाया गया. ठीक है जी. अब इसके बेसिस पे अगर हम क्वेश्चन सॉल्व करें, SEBI has replaced the volume weighted average price method with closing auction session for determining the official closing price of selected stock, correct? The new mechanism came into effect from 3rd of August, correct? CAS applies to all listed companies on Indian stock exchanges. So do it apply on all the listed companies in the stock exchange? What will be the answer? So the answer to this particular question is no, sir. Initially it will be applicable only to the stocks on which derivatives are traded. Equity stocks, derivative, equity stocks, equity shares available in derivative segment. Equity shares available in डेरिवेटिव सेगमेंट सिर्फ उस पे अप्लाई होगा, सब पे अप्लाई नहीं होगा. हाँ, फ्यूचर में हो सकता है कि सेबी इसे सब पे अप्लाई कर दे. ठीक है जी. अगला क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है. यू हैव 5 seconds, 1, 2, 3, 4 and 5. टेक द स्क्रीनशॉट. दैट विल बी ऑल. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. चलो, अगली न्यूज. ज्यादा समय नहीं लूंगा, 5 से 10 मिनट के समय में सारी कहानी खत्म कर दूंगा, कुछ है नहीं. सो रिसेंटली RBI हैज सबमिटेड इट्स मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट, and this statement is submitted by Monetary Policy Committee after 62nd meeting of Monetary Policy Committee was held from 3rd to 5th of August 2026 under the chairmanship of S. Malhotra or Sanjay Malhotra ji. So after assessing the domestic and global macroeconomic conditions, Monetary Policy Committee, all the 6 members, they came up with the answer that we should keep the policy rates unchanged at 5.25% and retain the neutral policy stance. Neutral policy stance, अब आपको पता होगा, if you are a paid student, I gave you the answer. Neutral policy stance मतलब देखेंगे सर जैसी फ्यूचर में कंडीशन होगी वैसा डिसीजन लेंगे, ना तो अभी ये सोच के बैठे कि बढ़ाएंगे रेट्स, ना ये सोच के बैठे कि रेट्स कम करेंगे. The decision reflects RBI's objective of balancing inflation control with sustaining economic growth and rising global uncertainties, particularly geopolitical tensions, volatile crude oil prices and uncertain monsoons की वजह से किया गया. तो भैया रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट as well as
स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, एमएसएफ, बैंक रेट, सबके रेट सेम रखे गए एंड द स्टैंस हैज बीन फिक्स्ड, दैट इज न्यूट्रल स्टैंस. अगला पॉइंट, सर व्हाई इट इज not change? The reason is, sir, in India, inflation is not 4%, rather it is increased from 4%, but it is increased due to volatile prices, that is food and fuel prices. So RBI is very well aware that core prices are still same, the core inflation rates are still within this control range, and the overall inflation rate is also close to the most appropriate rate of inflation, that is 4%. So there's no need to take any decision, any change right now. If anything goes wrong in the near future, we will make the changes. According to monetary policy statement and RBI, the GDP forecast for 2026-27 is 6.7%. So it is expected, as per RBI, that India's GDP will grow by 6.7%. Inflation for the month 2026, June 2026, overall inflation is 4.4%. We call it as headline CPI inflation, and core inflation is 3.9%. What is the expectation for the entire financial year? So the entire financial year is expecting an inflation rate of 5%, and the first quarter has recorded, the first quarter of 2027-28 is projected to record 5.3%. I guess there is no need to remember this data. I have to delete this data. मैं शायद delete करना भूल गया, कोई बात नहीं, अब कर देता है. So this data is not important. दूसरी तरफ अगर हम देखें कि क्या हालत है पूरी की पूरी इकोनॉमी की, सर लिक्विडिटी की अगर हम बात करें, आरबीआई नोटेड दैट बैंकिंग लिक्विडिटी सिस्टम रिमेन्स सरप्लस, मतलब बैंक के पास अच्छी खासी लिक्विडिटी है, देयर इज नथिंग टू वरी. Money market rates are moderated, government security yields are softened, and credit growth continues to remain strong across these sectors, which is a plus sign. Going forward, RBI will continue conducting two-way liquidity operations to ensure that weighted average call rate remains closely aligned with policy rate. अगर आपको याद है, मैंने आपको पेड क्लास में कल ही बताया था that minimum rate is SDF, maximum rate is MSF, and weighted average call rate should remain close to repo rate. अगर आपका weighted average call rate, the rate at which banks they borrow and lend loan from each other for short term, that is basically for 24 hours, if it is above or below repo rate, then the required changes are need to be done by RBI as per the given statement. Next we have financial stability assessment. Scheduled commercial banks, they show strong capital adequacy, better asset quality, comfortable liquidity positions, and healthy profitability despite slight moderation in the net interest margin. तो overall bank strong है, NBFCs भी strong है, remember that. Last is external sector. So the external sector of the country has observed major observation include current account deficit remain not high but not even low. It is modest because service exports remain strong. Remittance inflows are strong in counter to high import bills due to the increase in price of crude oils. Along with that, gross FDI inflow remains healthy. Portfolio investment has also improved, which is increasing the forex reserves with the country. So RBI retreated that the exchange rate will remain market determined. RBI ने clear किया कि sir it will remain market determined. I will only intervene if there is huge volatility, otherwise मैं intervene नहीं करूँगा. इसके अलावा RBI ने announce किया that RBI will strengthen the corporative banking sector, where RBI announced two proposals. First is RBI will provide guidelines for resuming the license of urban cooperative banks, and RBI will also provide draft for comprehensively revising credit monitoring assessment for rural cooperative banks, replacing framework last reviewed in 2008. तो जो credit monitoring arrangement है for rural cooperative banks, that will be replaced. And फिर से अगर कोई urban cooperative bank बनाना चाहता है, they can seek the license from RBI, so that on-tap license will be opened by RBI again. Next is harmonization of lending rate regulations. So RBI proposed to standardize regulatory framework governing interest rate on advances across all regulated entities. तो अभी तक हमने डिपॉजिट रेट पे जो आरबीआई का सर्कुलर आया था वो तो हमने पढ़ लिया, लेकिन अब हम अगली क्लास में पढ़ेंगे
circular of RBI on lending rate, that how banks will decide their lending rate and how these rates are going to be harmonized, how they can be uniform, how they can be same as per the latest announcement. In case of development part, sir, along with the monetary policy announcement, RBI has also introduced developmental and regulatory initiatives aimed at strengthening cooperative banking sector, improving lending practices and enhancing the monetary policy transmission. तो ऑन टैप का मतलब जब जिसकी मर्जी आए जाके अप्लाई करो, आरबीआई लाइसेंस देगा, देन यू कैन ओपन अप अर्बन कोऑपरेटिव बैंक. Credit monitoring arrangement for rural cooperative bank, which was reviewed last in 2008, will be now revised so that concentration risk management framework for रूरल कोऑपरेटिव बैंक कैन बी डन इन एन एप्रोप्रिएट मैनर. कितनों को कितना लोन देना है, किस सेक्टर को कितना लोन देना है, एक पार्टी पे कितना एक्सपोजर हो सकता है रूरल कोऑपरेटिव बैंक का, एवरी एस्पेक्ट विल बी फाइनलाइज सून. तो ये बेसिकली क्या है सर, दीज आर वेज एंड फॉरवर्ड्स विच आरबीआई हैज अनाउंस कि हम ये सारी चीजें करने वाले हैं. तो आप ये पढ़कर ये समझ लो कि आफ्टर द अनाउंसमेंट ऑफ दिस मॉनेटरी पॉलिसी, now RBI will be coming up with drafts related to all the points which have been mentioned. ठीक है, let's try to solve a question. Before that, review of guidelines on interest rates on advances. तो interest rates on advances मतलब आज की डेट में इंडिया में lending rate is calculated through EBLR, external benchmark lending rate. It has replaced MCLR. So MCLR was replaced by EBLR in 2019. So in order to standardize the process, interest rate charging methodology will be introduced. Day count conventions and benchmark reset dates will be clearly mentioned. तो आरबीआई ने कहा कि मैं कुछ चेंज नहीं कर रहा, बस आई एम जस्ट कमिंग अप विद द हार्मोनाइज्ड रूल्स, यूनिफॉर्म रूल्स दैट एवरी बैंक should follow, or every lending entity should follow the same rules with respect to calculation, implementation, disbursement of the loan, utilization of the loan, benchmark reset dates of the loan interest rate. Everything will be uniform for every organization. So don't worry. 3, 2, 1. These are the 3 different circulars which I will be discussing in near future. तो ये तो बस overview है which you need to understand. You have a question. Monetary Policy Committee unanimously decided to keep the policy rate unchanged at 5.25%. That is correct. MPC changed its policy stance from neutral. No, sir, it has not changed its policy stance. SDF rate is 5%. That is correct. So answer to this particular question is B option. 1 and 3 are the correct answers for the given one. Moving on to the next question. The next question is now on your screen. Take the screenshot and give me the answers in the comment section after the class is over. Actually, मेरे पास अभी 2-3 news और हैं, but I think we won't be able to complete it because I have a next class at 6 p.m. So let's conclude over here. You just take the screenshot, give me the answers in the comment section, and I will be discussing the left out news in the upcoming sessions to go. ठीक है जी, तो 3 न्यूज पेंडिंग है जो मैं नेक्स्ट क्लास में ऐड ऑन कर लूंगा. एंड इफ यू वांट टू डाउनलोड द पीडीएफ, डू जॉइन आवर टेलीग्राम चैनल विच इज एग्जाम नॉम फॉर यू. Just scan the code, join the channel in order to download the PDF. Thank you so much. We'll catch you soon. Bye-bye. Take care. Good luck. God bless you all.